Hello friends, today we have one more new topic that to discuss. आज हमारे लिए और एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। आप लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अभी हम रेजिस्टर की बात करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अराइजिंग हियर, व्हाट आर द रेजिस्टर्स? रेजिस्टर्स क्या है? रेजिस्टर क्या है? व्हाट इज ए रेजिस्टर? ठीक है, रेजिस्टर्स आर नथिंग, दोज आर सिंपल components, electrical components which are used in a circuit that to produce resistance. कभी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कुछ कंपोनेंट्स यूज करते हैं जो कि करंट को रेजिस्ट करता है, दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। सो यहाँ पर आप लोग ये पूछ सकते हो कि ये क्या, कौन सा कंपोनेंट, ये कैसे, किस टाइप का कंपोनेंट्स हो सकता है। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स व्हाट इज यूज्ड इन द सर्किट्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक बात यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग यूज करते हैं घर में अक्सर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, दोज आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेजिस्टर्स। ऐसा क्यों, कैसे? When you use any kind of electronic gadget in a circuit that consumes some amount of electric current, वो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है, and that use also produces hindrance, produces barrier in the flow of current. Here you could say each and every gadgets can be considered as a resistor. ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो एक सर्किट में अगर एक से ज्यादा इसी टाइप का गैजेट्स या कोई रेजिस्टर को लगा देते हैं तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा? दैट मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन वन रेजिस्टर्स विद इन ए सर्किट, what will be the net resistance? That means equivalent resistance. Today we will find out that how could you find out the equivalent resistance, net resistance. ठीक है, before going to find out that trick, we should know what are the different modes of connection of resistors. अगर इसी हिसाब से देखेंगे, रेजिस्टर्स दो तरह से सर्किट में रेजिस्टर को हम कनेक्ट कर सकते हैं, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हो, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स आर टू टाइप्स, दैट इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये है दो तरह के कनेक्शन। अभी ये क्वेश्चन आएगा, अगर इसी तरह if we are connecting more than one resistors within a circuit, what will be the impact on flow of current and the potential difference? Because current and potential difference both are most important factors in this case. ठीक है, in a series connection current is always remain constant because there is only path that available for the flow of current. सीरीज कनेक्शन में एक ही रास्ता होता है जिस रास्ते से करंट गुजरता है। सो यहाँ पर करंट कांस्टेंट रहता है हर घड़ी, कहीं भी सर्किट में किसी पॉइंट में भी सोच सकते हो, तभी करंट कांस्टेंट रहता है। At that same time all the resistors are connecting in series, that's why in regular interval resistors to resistors पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वैरी करता है। ये होता है सीरीज कनेक्शन में। अभी अगर बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन में जब भी हम रेजिस्टर को लगाते हैं, जैसे कि घर में अक्सर इसी कनेक्शन को यूज किया जाता है डिफरेंट गैजेट को लगाने के लिए। सो पैरेलल कनेक्शन में एक ही पाथ डिवाइड हो जाता है, एक पाथ को हम डिवाइड कर लेते हैं फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टर्स। सो यहाँ पर करंट वैरी करता है, क्योंकि करंट का जो गुजरने की रास्ता होता है वो अलग अलग हो जाता है, इसीलिए करंट यहाँ पर वैरी करता है।
at that same time the potential difference remain constant. ठीक है. रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम 3 रेजिस्टर लिए हैं, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, so here 3 resistors are in series connection. as I have already told you, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, in the series connection current is always constant while the potential difference varies. ठीक है. So now here in the figure 3 resistors are in series connection and the potential difference across all these 3 resistors are V1, V2 and V3 respectively. Let the potential difference across the battery, that will be V. As all of you know that current is constant here, then if you'll find out the potential difference across the 2 terminals of battery, that can be denoted as, इसको हम इसी हिसाब से लिख सकते हैं, V equal to V1 plus V2 plus V3. इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. इसके ऊपर हम थोड़ा काम करेंगे, इधर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. as you know, as per the Ohm's law, applying Ohm's law in the circuit, we will get V equal to IR. ठीक है. Similarly, from 3 resistors you will get V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, V3 equal to IR3. Now substituting all these values in equation 1, we get IR equal to IR1 plus IR2 plus IR3. From the both side, as you know, current is constant here, so current will be cancelled. At last we are getting the equivalent resistance across the series connection equal to R1 plus R2 plus R3. ठीक है. And this one is the principle, this one is the formula that to find out equivalent resistance when more than one resistors are in series connection. So out of this formula we can conclude here the net resistance equal to sum of all resistance across the resistors. Okay, and we can use this formula to find out equivalent resistance when resistors are in series connection. Let us consider one example for that, so that your doubt will be solved. So अभी हम एक example ले सकते हैं. So how we can apply this formula to find out the equivalent resistance when resistors are in series connection. So question is here, जैसे कि हम क्वेश्चन देख सकते हैं इधर, that you have to find out the resistance in the figure that all these 3 resistors are in series connection and each individual resistor has the resistance 5 ohm. Now you can use the formula to find out the resistance. After using formula, we are getting here the net resistance or equivalent resistance is equal to 15 omega. ठीक है. Now I think you can find out equivalent resistance when more than one resistors are in series connection. ठीक है. Very good. Thank you. Like series connection, अभी हम equivalent resistance निकालेंगे जब रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. So here resistors are in parallel connection. 3 resistors are here, R1, R2, R3 as per our figure. So we have to consider these 3 resistors in parallel connection. As I have already told you, in parallel connection the current varies while the potential difference remain constant.
across all these three resistors in parallel connection. ठीक है. Now we have to consider, अभी हम ये consider करेंगे from the figure three resistors are there, R1, R2, R3. So across all these three resistors, current regulation is like I1, I2, I3. The net current, the total current in the circuit that can be represented by, उसको हम इसी तरह represent कर सकते हैं, I equal to I1 plus I2 plus I3. इसको equation 1 रख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू हम डालेंगे. ठीक है. From the Ohm's law, as all of you know, I equal to V upon R. Similarly, I1 will be equal to V upon R1, I2 will be equal to V upon R2, and I3 equal to V upon R3. If you will substitute all these value, अगर ये तीनों के तीनों वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, हमें मिल जाएगा हमारा फार्मूला. So now put all these values so that you can find out the formula. So after putting here all these three values, we are getting now the equivalent resistance, that is 1 upon R equal to 1 by R1 plus R2 plus R3. This is the formula to find out equivalent resistance when resistors are in parallel connection. From this formula we can conclude that the equivalent resistance is equal to sum of reciprocals of all the resistance while resistors are in parallel connection. For our confirmation, हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जबकि रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में अगर कनेक्ट किया जाता है. ठीक है. सो नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन यू कैन सी in the figure we have taken three resistors, those are in parallel connection and each individual has the resistance 5 ohm. ठीक है. सो नाउ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे देख सकते हो आप लोग. सो वही फार्मूला हम डालेंगे इधर क्योंकि ऑल these three resistors are in parallel connection. So if you put all these value in this formula, you can find out the equivalent resistance, that is 1 upon R equal to 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5. अगर इन तीनों को मिला देते हैं हमें ये मिल जाएगा. तीनों को मिलाने के बाद हमें ये मिलता है 1 by 1 अपन R इक्वल टू 3 अपन 5 ओमेगा. यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है, कुछ बच्चे इसको ही डायरेक्ट रिजल्ट की तौर पर लिख देते हैं मगर ये एक्चुअल आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में है. सो उसका सही आंसर पाने के लिए हम इसको फिर उल्टा करके लिखना पड़ता है. सो ये बात हमेशा याद रखना है. दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू. सो the equivalent resistance will be here 5 upon 3 omega and that is nearly equal to 1.6 omega. ठीक है. So this is the whole session of finding the resistance in series connection and in parallel connection. We have derived two different formulas that we can use find out the equivalent resistance. So thank you, thanks for watching, see you next time. ठीक है.